बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारे एक नए टॉपिक के बारे में है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन। सबसे पहले तो आइए देखते हैं कि एक्सटेंशन से क्या मुराद है। द वर्ड एक्सटेंशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट्स एक्स एक्स जिसके मीनिंग है आउट एंड टेंसियो मीन स्ट्रेचिंग। So literally it means stretching out, that is stretching out beyond the boundaries of universities and research stations to reach the rural people to educate them on various issues। यानी सिर्फ वो तालीम जो सिर्फ स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है उससे बाहर निकालने का नाम है। The use of the term extension was first recorded in Britain in the 1840s. James Stewart, fellow of Trinity College, Cambridge, who gave several lectures to Women Association and Working Men's Club in the north of England during 1867 to 68, is considered the father of extension. But the term was formally used for the first time in 1873 by Cambridge University to describe a particular extension of educational innovation. This was the take the education advantages of universities to the ordinary people where they lived and worked। यानी वहाँ पे उनको एजुकेशन उस चीज़ के बारे में प्रोवाइड करना जहाँ पर वो रहते हैं और काम करते हैं, और वो एजुकेशन जो उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। Extension is an informal education process directed toward the rural population. This process offers advice and information to help them solve their problem. Extension also aims to increase the efficiency of the family farm, increase production and generally increase the standard of living of the farm family। बहुत एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है कि हमने सिर्फ उन्हें ऐसी तालीम नहीं देनी जो उनके काम ना आ सके, बल्कि हमने उनको ऐसी तालीम प्रोवाइड करनी है जिससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, उनकी प्रोडक्शन बेहतर हो, और वो जो काम कर रहे हैं उससे उसमें फ़ायदा हो। The objective of extension is to change farmers' outlook toward their difficulties. Extension is concerned not just with the physical or economic achievement, but also with the development of the rural people themselves. Extension agents therefore discuss matters with the rural people, help them to gain a clearer insight into the problem, and also decide how to overcome these problems। कि एक्सटेंशन एजुकेशन की मदद से ना सिर्फ जो फार्मर है वो अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, बल्कि उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करता है। Extension is a process of working with rural people in order to improve their livelihood. This involves helping farmers to improve the productivity of their agriculture and also developing their abilities to direct their own future development। उनको पता हो कि उन्होंने फ्यूचर में कैसी डेवलपमेंट करनी है, कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। ऐसी तालीम जो उनके किसी काम ना आ सके उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल दी स्टेटमेंट्स स्ट्रेस, जितनी भी अभी स्टेटमेंट्स हमने पीछे पढ़ी हैं, ये स्ट्रेस करती हैं दैट द एक्सटेंशन इज़ अ प्रोसेस। इसने इसको एक प्रोसेस बताया है, एक अमल बताया है, विच अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट अ सिंगल वन टाइम एक्टिविटी। ये जो एक्सटेंशन का अमल है ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बट इसका जो अमल है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता रहता है। They also all underline extension as an educational process which work with the rural people, support them and prepares them to confront their problems more successfully। और रूरल जो गांव के लोग हैं या ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको तैयार करना है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें सक्सेसफुली। If these statements are examined more carefully and if the current ideas and practice of extension are considered, four main elements can be identified with the process of extension। Process of extension के four element हम identify करते हैं। Number one is knowledge and skill। Knowledge और skill provide करती है। Technical advice and information, ये technical advice और information provide करती है। Farmers organization, farmer को organize करती है। And then मोटिवेट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनको मोटिवेट करती है और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फार्म्स के लोगों के लिए है, बल्कि वो तमाम लोग जो ऐसी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ये एक्सटेंशन एजुकेशन उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है ताकि वो अपने फ्यूचर को जो है वो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जो तालीम उनको दी जा रही है। थैंक यू वेरी मच।